Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you people in order to bring out the next video in our economic series that is wonderful, helpful and a beautiful initiative of Udan IAS. Acha. To be more specific, in the last of the class, we majorly had discussed regarding the nationalization of the banks. है ना? I told you regarding that there had been three of the division in the banking structure, in which I talk about number first was your what, that is commercial banks, number second was your cooperative banks, number third was your development banks, है ना? इसके ऊपर we majorly had discussed something. Then we majorly had discussed regarding that is in commercial banks में what could be your scheduled commercial banks, है ना? Scheduled commercial banks में, to be more specific, we majorly had discussed on SBI, we majorly had discussed regarding your nationalized bank, as well as we majorly had discussed regarding हाँ ठीक, इतना हमने किया था ठीक, पब्लिक सेक्टर बैंक में nationalization तक we had done. Now, so in today's class, what we will be doing is that we will be focusing our discussion on regional rural bank. We will be focusing our discussion on regional rural bank. Now see, if I'm talking about the regional rural bank, so first thing that you should be understanding, that is when in 1969 Indira Gandhi government came out with the concept of the nationalization of the bank, it didn't prove to be that much fruitful as it was expected to be. ठीक, एक्सपेक्ट किया था कि भैया बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, बहुत फ़ायदा होगा, बट इट वॉज नॉट ऑफ दैट केस, है ना? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं. वाई? बिकॉज स्टिल the lending, that is I had taught you in the last of the class, that is concept of financial inclusion, in which I told you that is how financial inclusion could be done through a concept of what, through a concept of an MCQ question. Take. So they were expecting that there will be a certain kind of financial inclusion that will be out there, but it just could not be reflected on the ground. Take. So in order to reflect that financial inclusion on ground, the government came out with the concept of regional rural bank, to be more specific in the year of क्या 1970s. ठीक है, 1970s में क्या कंसेप्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक वो लेकर आए. ठीक, अच्छा, when I'm telling you that obviously that is your banks, that is I told you in the last of the class, that is people who are having more money are having more access to the banking sector, but people who are having who are majorly from the deprived background, they are not having a good financial backing, they are not having the documents and all those kind of things. Take, they are not able to access the banking sector, they are just not able to take the money from the bank. Take, so अच्छा, majorly if I'm talking about, that is majority of India is having agriculture as the prime occupation. ठीक है, that is around 50% of the Indians in 50% of the Indians are employed in the agriculture sector directly or indirectly. ठीक, though it is producing, क्या मैंने डेटा याद रखना, around 50% of the people are employed in the agricultural sector. ठीक, but it is generating only 18% of the GDP. ठीक, एक ये छोटा सा डेटा याद रखना चाहो तो रख सकते हैं, है ना? So obviously if I majorly had to increase the financial inclusion, what I will be doing, that I will try to lend more in the agriculture, more in the rural area, है ना? ठीक, मैं क्या करूंगा, मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर एज वेल एज योर रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में I will try to enhance my lending. ठीक, and when I am trying to enhance my lending in this particular sector, so that will majorly mean that I have to create particular banks who will be catering only to this entire of the need, ठीक है. अच्छा, ठीक, तो इसी नीड को सर्व करने के लिए द कंसेप्ट ऑफ रीजनल रूरल बैंक स्कीम. ठीक, कंसेप्ट ऑफ रीजनल rural banks came. अच्छा, ठीक, so if I'm saying that is concept of regional rural banks came in order to enhance your lending in the agriculture and the rural sector, so that your financial inclusion in the country could increase, as nationalization of the banks had not been able to achieve those particular results. आई बात समझ में? nationalization आपका क्या was not able to promote that kind of financial inclusion.
As a result of this, there was a need that was felt in order to enhance the financial inclusion of what? Financial inclusion of the people, take, in agriculture and the rural sector, take. For that, what they did, they created a particular kind of banks. They created particular kind of banks. Now see, if I'm telling you regarding this entire of the case, take to देखो. So I can say that as the purposes of the nationalization of the banks were not much served in 1975, the concept of regional rural banks was introduced. ठीक है, कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1975 में. So from the historical perspective also, in modern India में क्वेश्चन आ सकता है आपका क्या कि arrange these other things in the chronological manner. ठीक, तो आपको याद होना चाहिए क्या नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1969 में. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ? 1969 में. रीजनल रूरल बैंक्स कंसेप्ट had came in the year of 1975. Take. So 1975 में there was actually an ordinance that was passed, which later was given a shape of a statutory provision, है ना. उसको बाद में एक लॉ का फीचर दिया गया, एंड दैट ऑफ द लॉ वाज रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट ऑफ 1976. ठीक है. सो regional rural banks came through a law, and that law is called as regional rural banks act of 1976. that you should be knowing. Take, as I had already told you, to provide what? To provide sufficient banking and credit facility for the agriculture. Take, number first of the thing. Next important concept that majorly comes in this entire of the thing is that which committee is responsible for the institution of the regional rural bank. So please remember that it was the N. Narasimhan working group. So N. Narasimhan committee was responsible for setting up of regional rural banks. Okay, so I will be saying that is what? That is Narasimhan committee, M. Narasimhan committee will be responsible for it. ठीक है. तो कब आया रीजनल रूरल बैंक? वाई इट केम because that the nationalization that happened in 1969 could not produce the required results. There was not much financial inclusion that was achieved. So in order to achieve the financial inclusion, what they did, they tried to increase their lending in the rural and agricultural sector. For it there was a committee that was constituted, and that committee was N. Narasimhan committee. It was constituted in the year of around 1975, because of which there was an act that was passed, that is Regional Rural Bank Act of 1976, through which regional rural bank came into picture. Now see, the other important question that majorly is getting framed from this entire of the thing is the proportion that you have to remember. क्या याद रखना है आपको? proportion याद रखना है. किसका proportion? तो देखिए, if I am saying that is in every RRB, in every regional rural bank, there are 3 entities that are associated with it. उसके 3 मालिक होते हैं. क्या? 3 entities you will be observing. ठीक, कौन कौन सी हैं वो 3 entities? Please see. Number first of the thing that is out there is your central government. Number first of the thing is your central government. ठीक. नंबर सेकेंड इज कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, कि जिस भी स्टेट में कंस्टिट्यूट हो रहा है उस स्टेट का क्या स्टेट गवर्नमेंट जो हो गया दैट विल बी क्या रिस्पॉन्सिबल. नंबर थर्ड, ठीक, द स्पॉन्सर बैंक. ठीक, स्पॉन्सर बैंक दैट इज एक प्राइवेट एंटिटी भी उसके साथ इट विल बी एसोसिएटेड. ठीक, कितने रेशो में? 50:15:35. दिस रेशो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, 15:15, 50:15:35. ठीक, इस रेशो पे ही क्या बहुत सारे टुच्चे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं. क्या? दैट इज 50:15:35. दैट फॉर एवरी 100 रुपी दैट इज इन्वेस्टेड, ठीक, 50 रुपी हैज बीन क्या कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय व्हाट? दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट. 15 rupees has been contributed by what? That is state government. ठीक, and 35 rupees has been contributed by what? That is concerned sponsor bank, जो particular bank होगा आपका. Able to understand? ठीक, now see. Obviously, I told you that is these regional rural banks will be scheduled commercial bank.
What are these scheduled commercial bank? I had already told you that which are coming under the second schedule of the RBI Act of 1934. ये मैंने आपको क्या पहले बताया था, है ना? ठीक. So what are these scheduled commercial bank that are coming in the second schedule? That are coming in the second schedule. ठीक. So please you remember this thing, that is RRBs are scheduled commercial banks. ठीक. अच्छा. They operate at regional level. They operate at regional level, so their main target will be the rural sector of that particular state or that particular region. ठीक है. They are not operating at a nationwide level. ठीक है. They are not like SBI और PNB जो nationwide level पे work करते हैं. ठीक है. They are nothing like that. Able to understand? Now see. ठीक. जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, एंड दैट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ठीक, दैट इज who is the regulatory and who is the supervisor, है ना? When I'm talking about the regional rural bank, when I'm talking about the regional rural bank, I am majorly saying that is I will be concerned about number first, who is regulator of these banks, ठीक है? Number second, who is the supervisor of these banks. ठीक. इनको सुपरवाइज कौन कर रहा है, तो इसमें देखना इसके दो एक तरह से वो आते हैं. ठीक. नंबर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव काम सारा क्या सुपरवाइजर, एंड बाकी सारे जितने भी रेगुलेशन वाले क्राइटेरिया हैं, ठीक है, दैट विल बी क्या सीन बाय द रेगुलेटर. ठीक. एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, दैट विल बी हैंडल बाय द सुपरवाइजर. ठीक है, हु इज सुपरवाइजिंग इट. एंड रेगुलेटरी विल बी क्या कि भैया पॉलिसी कैसे रखनी है, क्या कितना इंटरेस्ट पे है, ये सब जो चीजें हैं दैट विल बी decided by what? That is the regulator. ठीक. So next important question is that who is the regulator? Regulator for every bank that is out there will be your RBI, that is Reserve Bank of India. But when I am talking about the supervisor, ठीक है, इनका सुपरवाइज कौन करता है क्या? रीजनल रूरल बैंक को. So please remember it is your NABARD. Okay, so please remember that is NABARD will be responsible for supervising these regional rural banks. ठीक. अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, है ना? सो इसको क्या बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने कोई एक एग्जाम्पल डाल दिया. ठीक. अच्छा, अभी टाइम कितना है? ठीक. ओके. ठीक. तो आज की क्लास में ये रीजनल रूरल बैंक मैंने आपको करवाया. आई विल बी डिस्कसिंग वन मोर यूपीएससी क्वेश्चन. ठीक. अच्छा, तो एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं. दैट इज इन 1975, बिकॉज क्या नेशनलाइजेशन मेजरली फेल्ड. व्हेन द नेशनलाइजेशन, आई शुड नॉट बी सेइंग फेल्ड, बट येस इट वाज नॉट एबल टू क्या प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट. इन ऑर्डर टू एंश्योर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट वाज डन? अ committee was constituted. Which committee it was that is M Narasimhan committee. Take. Based on its recommendation, Regional Rural Banking Act of 1976 was passed, because of which regional rural banks came into picture. Take. To operate, to give the lending at region at a particular rural level of a particular region, mainly in the agriculture and all those kind of thing. ठीक. इसमें तीन एंटिटीज इसके क्या मेजर स्टेक होल्डर होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक. सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% एंड स्पॉन्सर बैंक का 35%. ठीक. दीज आर ऑब्वियसली क्या शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, बिकॉज दे आर क्या कमिंग अंडर द शेड्यूल्स ऑफ द आरबीआई एक्ट. इनके दो एक तरह के से क्या रेगुलेटर हैं. नंबर फर्स्ट इज योर रेगुलेटर, नंबर सेकंड इज योर सुपरवाइजर, है ना? तो दो के कोऑर्डिनेशन में आता है. नंबर फर्स्ट इज योर आरबीआई, नंबर सेकंड इज योर नाबार्ड. ठीक. ओके, so this is actually about today's class. In next of the class we will be discussing regarding what? That is cooperative banks. ठीक. अच्छा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्या बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन है क्या? इफ आई एम सेइंग दैट इज स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, क्या SLR रेशो, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड SLR बाय 50 बेसिस पॉइंट्स. ठीक. अब आपको पता है 50 बेसिस पॉइंट इज योर 0.5. ठीक है, 0.5%. ठीक. अच्छा, सो इफ इट इज रिड्यूसिंग द SLR, ठीक, SLR मैंने क्या किया? रिड्यूस कर दिया. ठीक. तो इससे क्या होगा? ठीक. SLR, अब देखो SLR आई हैव रिड्यूस. When I am reducing the SLR, so that majorly means कि certain amount of पहले क्या होता था कि आपका SLR में क्या आता है? That is your cash, government security, GSEC and gold. A bank can hold less, कम अमाउंट में होल्ड कर सकता है. ठीक. It is a kind of reserve only, so RBI saying you can reduce your reserve.
अच्छा, if you can reduce your reserve, if the bank can reduce their reserves, obviously that means क्या you can enhance lending, आप ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, you can enhance lending. In order to enhance lending, what I will be doing, I will be saying कि भैया पहले for example मेरे पास क्या 100 चॉकलेट थी, ठीक, if I was having 100 चॉकलेट्स एंड आई वॉज, एक चॉकलेट का प्राइस मान लो क्या था, अच्छा ऐसा समझो क्या, फॉर एग्जाम्पल अर्लियर 1 चॉकलेट वॉज बीइंग क्या सोल्ड एट 10 रुपीज, ठीक है. अच्छा, तो यहां पर मैंने बोला भैया चॉकलेट ले लो, कोई चॉकलेट लेने आया नहीं, ठीक. नाउ व्हाट आई विल बी सेइंग, अच्छा इफ इट इज नॉट बीइंग सोल्ड एट 10 रुपीज, व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी रिड्यूसिंग इट्स प्राइस टू 9 रुपीज, ठीक. नाउ आई विल बी सेइंग दैट इज नाउ 1 चॉकलेट 9 रुपी, 1 चॉकलेट 9 रुपी और चॉकलेट बिक गया, ठीक है. सिमिलर इज द केस विद दैट, आई हैव मोर मनी, नाउ आई विल रिड्यूस माई इंटरेस्ट रेट्स, आई विल रिड्यूस माई लेंडिंग रेट. सो on increasing the SLR, what the banks will be doing, they will be reducing their lending rate in order to enhance what, in order to enhance lending, and that is what is the answer, that is scheduled commercial banks may cut their lending rates, that is option C, ठीक. अच्छा, बाकी ऑप्शंस क्या है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, ना भैया पता नहीं बढ़े या ना बढ़े, ठीक. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मे ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू अवर कंट्री, पता नहीं, बिकॉज फॉरेन कैपिटल इज क्या, इट इज क्या डिपेंडिंग अपॉन लॉट मेनी फैक्टर्स, यू जस्ट कैन नॉट क्या एक्सपेक्ट दैट, ठीक. इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी ऑफ द बैंक, नो, ठीक, ये तो क्या सरासर गलत हो गया. लिक्विडिटी पहली बात तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिड्यूस तो होगी नहीं, और ऊपर ड्रास्टिकली लिख दिया तो और गलत, ठीक. सो ऑप्शन विल बी सी. आज की क्लास में इतना ही करेंगे, रेस्ट विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट ऑफ द क्लास, ठीक. एंड यस प्लीज क्या, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब उड़ान IAS का चैनल, बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप अस मोटिवेटेड. स्प्रेड इट among your friends, among your families, among your relatives, and please talk about the good initiative that we are doing. So please do like, share and subscribe, ठीक. और जैसे मैं हमेशा अपनी क्लास करता हूँ, कैसे, अपना पहले तो टेलीग्राम ग्रुप दिखा के, येस इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी यू कैन ऑलवेज कनेक्ट एट माई टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज Sammy2908. इसके डिस्क्रिप्शन पे जाके वीडियो के मतलब इस टेलीग्राम ग्रुप के जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली द ओनर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक. ठीक, तो जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए. वाई, बिकॉज UPSC इज नॉट अ गेम ऑफ IQ, इट इज़ अ गेम ऑफ EQ. चलो बाय बाय बच्चा, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय.